On behalf of Malviya Center of Peace Research, BHU, we welcome your organization and Madam Helma Richa to this occasion of felicitation. Today is a very auspicious day, being the Saraswati Puja, and also we are celebrating our 100 years of BHU's establishment. It's a very auspicious day. On this day, we are actually felicitating the students who have been benefited from this organization in the field of education. Thank you. सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रेमसाइड जो है एक शहर है जिसको टूल्स का शहर कहा जाता है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो टूल्स बनाए जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा रोटिंगटन का, जिन्होंने एक्सरे की स्थापना की थी, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो उसी शहर से। और वो शहर में सबसे ज्यादा जो है बाहरी लोग बसे हुए हैं। तो मल्टी कल्चर का जो सबसे बड़ा एक सेक्टर जो है जर्मनी में रेमसाइड शहर है। रेमसाइड शहर को जोड़ने का काम हेमा रिचा ने किया। पंडित विकास महाराज जो सरोद माधव है, जिनको स्मारक पुरस्कार मिला है, इनके साथ इस शहर को उन्होंने सबसे पहले जोड़ा। और इन लोगों ने जाकर के, इनके भाई पंडित प्रकाश महाराज, इन लोगों ने वहाँ पे सरोद और तबले के साथ जैज म्यूजिक और एक रेमसाइड एकेडमी है, उसके साथ मिलकर काम किया। और उस काम के साथ साथ PVCHR के साथ 2002 के साथ आपने काम करना शुरू किया। और जो ग्लोबल मार्च हुआ था कैलाश सत्यार्थी का, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसमें भी आप शामिल हुई। और इस साल उस पूरे इंडो जर्मन सोसाइटी का तो 50 साल, करीब 5 साल पहले बनाया गया है। इस साल उनका जो है 50 साल है, जो जून में वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बनारस के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। और खासकर हेमा रिचा ने करीब 100 बच्चियों को जो है उनके नाम पे हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पैसा हम उनसे नहीं लेते हैं, पैसा अलग अलग सोर्सेज से हम लोग करते हैं। तो उन बच्चियों को भी आज हम लोग, जो 2 साल और 3 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं, उनको भी आज हम लोग सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित कर रहे हैं। मैं आई कॉल टू दी हेमा रिचा एंड मारियोस, दे विल कम। हेमा रिचा के साथ प्रॉब्लम है कि उनको आँख से दिखाई नहीं देता है, मतलब तो वो कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद मारियोस जो है, जो उनके साथ आए हैं। मारियोस ने एक दलित टीम बनाई थी, दलित लोगों के साथ काम करने के लिए। और बाद में इन लोगों ने अभी एक प्लूरिज्मो और शुक्रिया करके एक संगठन बनाया है, जो लगातार बनारस के साथ और इंडिया के साथ जुड़ करके काम कर रहा है। तो प्लीज हेमा जी एंड मारियोस, प्लीज कम हियर। All, I want to tell you that I'm very happy to be here, and that it is a great honor to be here at the time when the university is celebrating its 100th anniversary. Congratulations from our society, that means from Germany as well. And now I would like to send my greetings to you to the 50th anniversary of our society, which is organized by Dr. Lenin, PVCHR. And that I can stand here in this honored place, I would like to thank for Mr. Professor Priyanka. That is also a great honor, and I'm happy to be with you. So, greetings and a great thanks from Germany for you, dear Dr. Lenin Raghuvanshi, dear Shruti Raghuvanshi, dear Shireen Shabak-Ankam, and PVCHR, and dear people of Varanasi. It is a great honor for me to celebrate together with all of you today, and with the many invited guests, the 50th anniversary of our Indo-German Society Remschied here in Varanasi. In Germany, we will start the celebration in June 2016 in the town hall of Remschied, where we will have Dr. Lenin Raghuvanshi as our guest of honor. As Dr. Lenin told me that he decided together with his wife Shruti and the whole PVCHR team to invite me to India for celebrating the anniversary of our company here together with all of you, I felt deeply touched. Moreover, I'm even now deeply touched, moved in the moment I stand here before you.
holding this wonderful booklet in my hand. Where is the booklet? We made a booklet. Yes, but it doesn't matter. And I have a wonderful booklet in my hands. This booklet was a very lovely idea of PVCHR. Before I continue, I would like to take this opportunity once again to express on behalf of our society and personally as Helmarji our wholehearted gratitude towards Dr. Lanning and the whole PVCHR team. Thank you for your generous gift, the invitation and the ceremony as well in the successful brochure, as well as a successful brochure. I thank you. I thank you. Thank you. This brochure tells a story of the extraordinary friendship and harmonious cooperation between the PVCHR and our Indo-German Society Remschied since early 2002, when we met each other for the first time. But what has brought us together? I will tell you, but because of my eye problem, Marius will go on telling you what I want to tell you. At the time of our first meeting, the PVCHR was at the beginning of its development to become a recognized organization of human rights. Our society from Remschied had experience since many years. We organized numerous events and projects in which we wanted to explain and show the diversity of the Indian culture and its unique traditions, past and present, to the German public. We also organized an exchange between Indian and German schools. Thanks to pen-pal friendships and project work, the students were able to overcome prejudices, create a better understanding for each other, and develop an appreciation of each other's culture. We were convinced to be good mediators between the two cultures. That changed abruptly when the Global March 1998, which was initiated by Kailash Satyarthi as the international coordinator. Here I want to add that Mr. Satyarthi was honored for his tireless efforts against the exploitation of children in South Asia and his fight for the access of all children to education with the Nobel Peace Prize in October 2014. The Global March brought child laborers from different parts of the world for the first time to Geneva, Switzerland, to the meeting of the ILO, International Labour Organization. They should get the opportunity to talk for themselves about their rights and against intolerable child labour. They also came with thousands of thumbprints they had collected on their way to Geneva as an evidence of solidarity. We suddenly became aware of our global responsibility for the fate of this world's suffering children, particularly children in India. The examination of child labour and the lives of the marginalized and neglected Dalit communities showed us quite plainly that we also had marginalized them in the programs of our Indo-German Society Remschied until the Global March. The issue of human rights was immediately on the agenda of our society. From this moment on, we actively organized a day of action, actively participated in the Global March, updated the theme in Remschied schools through information material, and organized a day of action in the city center. One of our activities was a charity concert of the esteemed musicians and brothers Prakash, who unfortunately died, Subhash and Vikash Maharaj of Varanasi. We know each other since 1983. Today we share a deep friendship and a multifaceted cooperation. Vikash, the founder and vice president of human rights organization PVCHR at that time, invited me after the concert to Varanasi to meet the founder of the PVCHR, Dr. Lenin Raghuvanshi. Unfortunately, it took 4 more years until I met Dr. Lenin and the PVCHR for the first time. The Global March had already given me an insight into the discriminatory situation of the Dalits. But to see the situation
with my own eyes shocked me even more. However, how happy the crowd of children greeting when I arrived at the villages. The people were so friendly. From this moment, the cooperation between PVCHR and our society was decided. The promotion of Dalit in the struggle for their rights and their appreciation as equal human beings became the main topic of the affiliate Remschied. Beginning in 2007, the Indo-German Society utilized public funds of the German government in North Rhine-Westphalia and sponsors from Remschied to enable the construction of social and educational facilities in the villages around Varanasi, like Aya, Bakwanala and Shivampur. In the more distant village Rao, a community center was built for and by the Dalit communities headed by Dr. Lenin and the PVCHR. 1 year before, in 2006, our affiliate in the PVCHR had started an educational initiative between between a team of Remschied Gymnasium and Dalit students. The Remschied students have campaigned on public actions to promote the struggle of their Dalit friends for equal rights. Today, the German students are grown up, but still engaged on sustainable projects. One of them, Henrik Sadowski, will come in March for the third time to Varanasi, to be with the PVCHR and his Dalit friends. Over the years, an indestructible bridge of friendship has been created. This bridge, brought by Dr. Lenin also to Remscheid, where the Lord Mayor in the town hall received him. Moreover, on behalf of our Indo-German society, I have been here in India for many times. In all the years, I attended some inaugurations of important buildings like the Savitri Baipur Women's Center in 2012. Yes, and it is my aim to finish. I started and I would like to finish with the Women's Center. Yes, where is it? Yeah. After this opening in Bakwanala, the Helma Richer Education Scholarship Fund was initiated by PVCHR as recognition for the work of our society and our commitment to education for all children. The scholarship, as a long-term and sustainable initiative, offers underprivileged boys and girls the opportunity to receive continued education. Deeply impressed and moved by the idea, I accepted this honor. Today, I will share happiness with all the young people, which is difficult for me to express, to share happiness with all the young people who have successfully graduated with the help of the Helma Richter Education Scholarship Fund. It will be a great honor for me to hand over the certificate of the Indo-German Society Remscheid to the young Dalit graduates, a certificate as a symbol of recognition and as a sign that there are equal, emancipated and well-educated Indian citizens with rights and dignity. We truly celebrate this occasion today and tomorrow here in Varanasi. The unique friendship and sustainable cooperation between PVCHR and the Indo-German Society Remscheid on special occasion of the 50th anniversary of the Indo-German Society affiliate Remscheid. But why a German celebration in Varanasi? Because Germany and India, Remscheid and Varanasi, Indo-German Society and PVCHR live in our hearts today and in future. And together we are celebrating the 100th anniversary of university as well. I thank you so much. ब्रीफ में हिंदी में हेमा जी ने वालियों से जो बातचीत रखी थी, ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ कि हेमा जी ने कहा कि ये जो 50 साल हो रहे हैं
यहाँ इससे पहले यहाँ पे जो जुड़ाव हुआ था वो पंडित विकास महाराज और उनके जो भाई पंडित प्रकाश महाराज भी थे उनके साथ, और 1998 में कैलाश सत्यार्थी जिनको इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला था पिछले साल, उनके ग्लोबल मार्च के साथ भी जो है रेमसाइड जुड़ा हुआ था। और इसके बाद उन लोगों ने कई जगह सेंटर्स बनाए, आयर में, सुशील त्रिपाठी जी के नाम पे, रॉक में, भगवा नाला में, उसका और शिवरामपुर में, और एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी जिसमें अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया है। कि उस स्कॉलरशिप का नाम हेल्मा स्कॉलरशिप फंड रखा गया 2011 में। और जो बच्चे कुछ साल पढ़ करके जिन्होंने सक्सेसफुल किया है उनको आज हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आज क्यों हम मना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मना रहे हैं कि जर्मनी और भारत और जर्मनी, रेमसाइड और बनारस और इंडो जर्मन सोसाइटी और PVCHR वो यहाँ और वहाँ लोगों के दिल में है, और इसलिए इसको जो है जर्मन सेलिब्रेशन हम बनारस में भी जो है करते हैं। साथियों ये इसलिए हम लोगों ने किया कि इंडो जर्मन सोसाइटी की तरफ से था, मालवी सेंटर फॉर पीस रिसर्च और PVCHR की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। आप पंडित विकास महाराज जी को जो है आमंत्रित करेंगे कि वो हेल्मा ऋचा जी को बुके दे करके और शॉल दे करके, बनारस में एक जो शॉल है स्कार्फ वो बनारस के बुनकरों की तरफ से है। सो बनारस के बुनकरों की याद में हम लोग जो है हेल्मा ऋचा जी को एक शॉल भी दे रहे हैं। सो आई जस्ट appeal to Pandit Vikas Maharaj give the honor on the behalf of Malviya Center for Peace Research and the PVCHR to Helma ऋचा। Right from silence. I should come to you. Come front. I think that is correct. आप लोग आर्टिस्ट हैं तो जानते हैं। Please go. Don't do this. Of course. Thank you so much. One more. Thank you so much. Thank you so much. हम लोग PVCHR की तरफ से जो है जरूर नहीं आप बोलिए नहीं आते वही आया ये हमारा Can I change this because it is एकदम आगे सारे में डाल रहे प्रोफेसर प्रियंका जी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने मेरा जो दिमाग बदला है, मतलब जो आजकल में जिसको आप कह सकते हैं कि जिस मानव अधिकार और लोकतंत्र के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले जिन लोगों से मैंने सीखा उनमें से प्रोफेसर प्रियंका हैं। लेनिन जी हम लोग के फर्स्ट स्टूडेंट है प्रभास महाराज जी से जो तबला वादक है प्रसिद्ध, मैं उनसे उनको आमंत्रित करूंगा कि ही जस्ट ऑनर टू मिस्टर Marius. Marius is the founder chair of the tourism and also is involved with the Shukriya. This is from the Can I place it here? Or it's not, it's not good? Dr. Mahendra Pratap ji को मैं कहूँगा हम लोग एक ब्रोचर है, अभी ये ब्रोचर असली लॉन्च होगा जून में, और हम लोग उसका इनॉग्रेशन आज कर रहे हैं हम लोग। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च द ब्रोचर ऑफ द इंडो-जर्मन सोसाइटी एंड PVCHR where they describe about they provided the descriptions of the 50 years of work of the Indo-German society and the Remschied. So first part is a link with the PVCHR and the Indo-German society. Second part is the music, literatures, art, culture, different type of works, kitchen. आपके जो लॉर्ड मेयर हैं उनका जो है मैसेज है, और इंडो जर्मन सोसाइटी जो पूरी जर्मनी के उसके अध्यक्ष हैं। एंड इस साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 50वां साल गिरह मनाया जा रहा है, एक शताब्दी मनाई जा रही है।
और इसके साथ दुनिया में सबसे पहला जो विमेन म्यूजियम बना था वो बोन में बना था, जिसका 35 इयर्स हो गए हैं, और इंडो जर्मन सोसाइटी रेमसाइड के 50 साल। तो इस अवसर पे जब ये हिल्मा रिचा जी यहाँ आ रही थी तो बोन के विमेन म्यूजियम के डायरेक्टर्स ने और वहाँ के एक आर्टिस्ट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पे और अपने म्यूजियम के 35 साल होने पर एक गिफ्ट भेजा है प्रोफेसर प्रियंकर जी के लिए, और जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। Esteemed chairholders, dear Professor Priyankar Upadhyay, it is a great honor to present you as the chairholder of the UNESCO Chair for the Peace and the Intercultural Understanding, Banaras Hindu University. This picture by the artist Mr. Horst Olaf Smith, a symbol of peace on the behalf of Indo-German Society affiliates Remschied. It is also a great honor to be invited to be the worldwide famous university. I am also grateful to be here. Let me also express my gratitude for the generosity to celebrate the 50 anniversaries of the Indo-German Society Remschied at this exceptional place. I also want to thank me for his friendship and the partnership since 2002 for the inviting in Varanasi, and allow me to congratulate you on the behalf of Indo-German Society to 100-year anniversaries of the Banaras Hindu University. And the picture shows the 7.5 meter high work of the artist titled Ladder to the Heaven, which is displayed at the first Women Museum in the Bonn, Germany. The museum celebrates its 35 anniversaries, and the founder and the director, Ms. Marian Pidgeons, and the artist, Mr. Horst Olaf Smith, send their warmest regards. It would be the great honor if the pictures presented on the occasion of the 50th anniversaries of the Indo-German Society Remschied would be displayed at the Banaras Hindu University, thus build a bridge between Banaras Hindu University and the Women Museum, Bonn, Germany. So I appeal to Helma, please present this to Professor Priyankar. That is only one thing. It is a 7.5 meter high ladder to heaven, and the ladder to heaven is like a metaphor in all the religions. And but there is a special picture. It is in the museum, and these are only parts of the ladder. The symbols. That's a ladder, and that people nowadays like to look for money and like this, and not really to look for the values of life. And that should us think about what means ladder to heaven, that it is development of our personality and to find the real life and way and the sense of life. And the ladder will be is an installation, and it is placed in the Women Museum, and on the occasion of an exhibition which starts in April until October, and after this it will become a constant symbol of peace in the museum. And Mr. Smith is the only man within a range of very famous painters and women who organized the exhibition. And the title of the exhibition is Women and Work. And I came to know by Mr. Priyankar that he is also doing, what is it called, also like a topic for women, Women and Peace. And look how it happened. We were not aware that I would take this. It was 3 days ago that I said, that is a wonderful bridge. That is a bridge, that is a wonderful symbol of peace, to build a bridge between you and Germany and museum and university. And maybe that one of you go to the museum like this. I don't know, it is up to you. I thank you that you take it. It is only symbol of peace. Because he won.
The various religions are the like different roads converging at the same point. What difference does it make if we follow different routes, provided we arrive at the same destination? Mahatma Gandhi. The ladder of heaven, the ladder of divine essence, Jacob ladder, is the symbol known in the most religion, also as a metaphor in the Buddhism and Hinduism, but is interpreted in different way. Nowadays, many people mistake the ladder for achieving superficial aim like the consumerism, power and the fame. Many youth it's run without regarding man and the natures to be first in the achieving these one-sided attributes. The German artist and the resident of the Remschied, Mr. Horst Olaf Schmitz, has created the ladder of heaven as a sign against consumerism and the questionable aim of achieving the riches, power and the fame. The artist understands the ladder to heaven as a symbol for the peace, which connect in its original interpretations and the radiance all religion in the world. The ladder leads toward the first run, which gives us supports on our way through life and teaches us to become considerate, compassionate, grateful and achieve humility. The 7.5 meter high original ladder to the heaven is a place in the internationally established first women museum in the Bonn, Germany. The museum was founded in the 1981 by its director, Miss Mariana Pitt, consultant for the arts and the culture, and curator, Mr. Peter Koster. In 2016, the Women Museum is celebrating its 35th anniversary. It is the germs for the more than 50 women museums and initiative worldwide. For the first time, the ladder to heaven by the Horst Olaf Schmitz will be displayed as the work of only men artists among the 100 renowned female artists participating in the exhibition Work and the Women from 17 April to the 30 October 2016. After the exhibitions, the installations of the wood, steels and the hand will remain in the Women Museums, Bonn, Germany on the permanent loan. On the 50th anniversary of the Indo-German Society at Remschied, the picture of the origin of the artist's work, a mixture of the photographs and oil on the canvas, will be presented to the Varanasi University through the Professor Priyankar as a symbol of the peace. So this is the message by the artist. And हम लोग हर साल कुछ लोगों को जन्मदिन पुरस्कार देते हैं. इस 50 साल के वर्षगांठ पे हम लोगों ने 2 लोगों को चुना था कि एक इस फैकल्टी इस डिपार्टमेंट से भी जुड़े हैं, जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ मोहम्मद आरिफ है. पर डॉक्टर आरिफ के यहाँ जो बीमार हुए थे तो डॉक्टर आरिफ साहब आ गए हैं. तो हम डॉक्टर आरिफ साहब को सादर आमंत्रित करेंगे कि डॉक्टर आरिफ साहब ने अपनी जिंदगी में कॉम्युनल हार्मोनी, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलरिज्म की वैल्यूज और खासकर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना के प्रियम्बल को जमीनी हकीकत पे कैसे लाया जा सके, उसके लिए वो काम कर रहे हैं. और हर तरह के जो अलग अलग धर्मों के अंदर जो कट्टरपंथ है उसके खिलाफ एक माहौल बनाने में, उसके खिलाफ एक आर्गुमेंट बनाने में, जमीन पे जाके काम करने का काम किया है. सो वी आर वेरी ऑनर्ड टू गिव द ऑनर टू द डॉक्टर आरिफ मोहम्मद आरिफ as a journalist award on the behalf of PVCHR. So Professor Priyankar और डॉक्टर महक प्रताप जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं. बीच में केवल यही नहीं, हम लोग के बीच में सनातन धर्म के लिए काम करने वाले काम करने के साथ हम न्याय, समता और लोकतंत्र को सनातन मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस साल जो है आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी जी को भी जो है जर्नलिस्ट समाज से सम्मानित करते हैं. और वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते. मैं अपने भाग्य की आज सराहना करते से कोई उपमा नहीं खोज पा रहा हूँ. यह
महामना वाल्मीकि कृतित्व का 100वां वर्ष चल रहा है। भारत जर्मन मैत्री के लिए काम करने वाली संस्था का 50वां वर्ष चल रहा है और सारा विश्व जानता है कि संस्कृत सभ्यता का आर्य, जो आर्य सभ्यता, आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य कोई हिंदू नहीं, आर्य कोई मुसलमान नहीं, आर्य कोई ईसाई, आर्य माने श्रेष्ठतम जो जाति है, उसके लिए बीज 2 ही जगह पाए जाते हैं, जर्मन में और भारत। भारत का सबसे प्रदेश वह आर्यों का आर्य देश कहा जाता है और मैक्सिमम विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का माना है। तो आर्य सभ्यता का मूल स्रोत के 2 राष्ट्र के प्रतिनिधि आज एक साथ काम कर रहे हैं। ये आर्य सभ्यता है जो सिखाता है कि मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र एक ही तत्व के हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृह तस्य शुद्धनम्। ये हमारा उपनिषद वाक्य है, ये आर्य संस्कृति का उद्घोष है। जो लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं उनके प्रति मैं कोट धन्यवाद देता हूँ। महामना वाल्मीकि जिनके पीस एसोसिएशन के प्रियंकर जी हैं, उनका एक ही वाक्य था, न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। व्यक्तिगत स्तर पर एक महापुरुष की कामना इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकती। और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सारे विश्व के ह्यूमन राइट्स के बीच इन्हें 3 व्याख्या कर लो, एक अंश भी आप जीवन में उतार लोगे तो मानवता के परम सहचर होगे। आज भारतीय संस्कृति, आर्य सभ्यता और विश्व मानवता का सम्मान है। इसके लिए मैं अपना कोट से आभार व्यक्त करता हूँ। आप आगे आकर के 2 शब्द बोले। धन्यवाद। हाजिरीन महफिल, मालवी पीस सेंटर में जन्मित न्यास अवार्ड पाकर मैं बहुत अभिभूत हूँ, बड़ा खुश हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और ख़ास तौर पर मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसके रेजोल्यूशन के लिए देश भर में काम करता हूँ। और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जब कोई प्रोग्राम आयोजित करे और उसमें इस तरह का अगर मुझे अवार्ड मिले तो शायद मेरे लिए एक हस्ताक्षर होता है। तो बड़ा खुश हूँ। सेकुलरिज्म, बस एक बात मुझे कहनी है कि हमारे संविधान की आत्मा है सेकुलरिज्म और विविधता। हमें इस सेकुलरिज्म और विविधता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब लोग मालवी पीस सेंटर, PVCHR जिसने मुझे ये अवार्ड दिया है, मानवाधिकार के लिए संघर्ष करता रहा है और मालवी पीस सेंटर भी इस तरह के मूल्यों को स्थापित करने में सतत प्रयासरत रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान की मूल आत्मा को बजाय रखें, सेकुलरिज्म और विविधता और साझी विरासत के लिए संघर्ष करते रहें। यही हमारा नारा है और इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हम लोगों ने 2015 में एक बनारस सम्मेलन किया था। बनारस जहां एक जी अपना आके अपना वक्तव्य देंगे, उससे पूर्व हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्मा रिचा जी के नाम से जो स्कॉलरशिप बनी थी, यहाँ बच्चियाँ आई हुई हैं अलग अलग जगहों से। ये स्कॉलरशिप हम लोगों ने समाज के सबसे गरीब तबके के लिए देने की कोशिश की है, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, शेड्यूल ट्राइब्स के, OBC के। बाद में हम लोगों ने मुस्लिम बच्चियों को, खासकर बजड़िया में ऐसी बच्चियों को दिया। एक बहुत अच्छी बात हुई कि एक मीटिंग हुई थी हमारी जिसमें दलित लोगों की, मैं तो नान दलित हूँ तो मैं उन लोगों के बीच में जो है जन्म से तो मैं ऐसी नहीं हूँ। जब मैं उन लोगों के बीच में गया तो उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव इस बार दिया कि जो भूमिहीन ब्राह्मण है या भूमिहीन जो श्रवण है उनको भी हमको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। और इस तरह से 15 सालों के बाद अपनी अपनी पहचान, क्योंकि हम लोग हमेशा जात को छिपाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसको डिस्कशन करने के साथ साथ, क्योंकि मैं डॉक्टर रहा हूं तो मुझे यह है कि बिना डायग्नोसिस के आप कोई ट्रीटमेंट
नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को पहचानिए और पहचानने के साथ जिस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश किए हैं, जिस तरह की प्यार हुआ है, और PVCHR के अंदर 5 अपर कास्ट लोगों ने इसको जो है इस्टेब्लिश किया था कि आज 18% अपर कास्ट लोग हैं, 34% मुस्लिम्स हैं, 27% OBC हैं, 17% जो है SC हैं, 6% जो ST है इस संगठन के अंदर, स्टाफ के अंदर, और 2/3 जो है मतलब जो है नॉन अपर कास्ट आप कह सकते हैं वो लोग हैं। और ये किसी अफर्मेटिव एक्शन से हमने नहीं किया, लोगों के साथ मिलजुल करके हम लोगों ने क्रिएट किया, और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और चीज़ों को काम करते हैं। तो इस बातचीत के साथ इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब को ये वादा करते हैं कि बनारस की परंपरा रही है, बनारस की परंपरा हमेशा जिंदा रहेगी। अगर काशी की परंपरा और अगर बढ़ करके पूरे हिंदुस्तान की अगर परंपरा हो जाए तो चीजें हो सकती है। जब यहाँ मुसलमान आया तो अगहन महीने को, सबसे पवित्र महीना जो सनातन लोगों का है, हिंदुओं का है, अगहनी जुमा को सबसे महत्वपूर्ण जुमा मानते हुए अगहनी जुमा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। आपसे अपनी बात मैं कह चुका हूँ, बट दैट वाज इन एन एलियन लैंग्वेज, सो आई विल स्पीक टू सम ऑफ द यंगस्टर्स। हिंदी में बात करूँगा। बच्चियों को देख के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आप लोग कभी भी लौटे यहाँ से, वो जो यहाँ की छात्राएं नहीं हैं, बहुत से नए बच्चे हैं यहाँ पे। हमारी बात समझ में आ रही है? आपको सुनाई पड़ रहा है? मेरा नाम पता है, हम लोग यहीं रहेंगे अगले 10-15 साल तक, और मतलब तो सेंटर चले गई अपनी जगह। तो यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत हो, कुछ निर्देश चाहिए हो, रिकमेंडेशन चाहिए हो, सुस्ताना हो, पानी पीना हो और अच्छी बातें सुननी है और पढ़ना हो, तो आप यहाँ आएँ। यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोग तो सेमिनार्स वगैरह करते ही रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक बार फिर से इस प्रयास का मैं स्वागत करता हूँ। लेने जी के साथ हम लोगों का, श्रुति जी के साथ संबंध ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का है, लेकिन बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन उनसे मेरा सानिध्य कभी कम नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ता गया। और उनके इस परिवार में, जिसमें विकास महाराज भी हैं, प्रभाष भी हैं, पंडित जी, हम लोग सभी हैं, किसका नाम लूँ किसको छोड़ूं, आप सभी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। और इस दिवस पर हम लोग सभी मिलके ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अपने एक दूसरे के लिए भी जिए, सिर्फ अपने लिए न जिए, एक दूसरे के लिए भी जिए, एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए जिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा धर्म है, मैं धर्माचार तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है सब धर्म एक बात तो कहते हैं कि अगर इंसान में वो ईश्वर को नहीं देखता है, खुदा को नहीं देखता है, क्राइस्ट को नहीं देखता है, तो वो इंसानियत उसको नहीं आएगी। और बिना इंसानियत के जीवन क्या होता है? इशारा देखिए, लेटर लगाइए, आगे बढ़िए और कमाइए, GDP, ऑयल, पॉलिटिक्स, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। तो सर एक बिटिया को जब शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाते हैं, उसको उसका सशक्तिकरण करते हैं, तो हम एक परिवार, एक समुदाय बनाते हैं। आप सभी का स्वागत है, इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहना है। हमें ऐसे सहस्र प्रयास अपना संगठन बनाया, अपनी नुक्कड़ नाटक किए, उन्होंने अपनी फिल्में बनाई। और यही नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा जब खुशी हुई जबकि उसमें से पढ़ के बच्चियाँ UP कॉलेज में जाकर के खुद दाखिला ली, दाखिले में खुद सफल हुई, और अपने आखिरी साल में, और उसमें से एक बच्ची जो पूजा है, वो जो है एक FK फेलोशिप होता है, FK माने पीस कॉर्प जैसे है, वैसे नॉर्वे के पीस कॉर्प को FK बोलते हैं। तो यहाँ पे निर्मल बैठे हैं नेपाल से, ये आपकी संगीता जी बैठी है, और दिलसाद है अपने, जिनके साथ पूजा का भी सिलेक्शन जो है पीस कॉर्प फेलो के लिए हुआ, और 7 दिन के लिए नॉर्वे गई, 4 महीने यहाँ काम करेंगे, 4 महीने काठमांडू में जाके इंसेक्ट के साथ सीखेंगे। तो ये स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट रहा है जो है बच्चों का। और यास्मीन और जो ये बच्ची थी आपने देखा है, वो यहाँ है, उनको परेड में गणतंत्र दिवस पे बुलाया गया, क्योंकि 100 बच्चियों में जो एक टेलीविजन इंडिया वर्ड्स न्यूज, उन लोगों ने जो है उनको जो है चुना उनके काम के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में सेक्सुअल वायलेंस को रोका जो है। तो ये शुरू किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि चीजें। हम 5 लोगों का नाम बुलाते हैं, वो यहाँ पर आ जाए और सारे गेस्ट हमारे साथ उनको दे दे, फिर एक एक करके हम लोग बाकी बच्चों का नाम बोलेंगे। तो गुंजा कुमारी,
ज्योति, जूली, कुसुम और कंचन। राष्ट्रगीत गा करके हम लोग खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगीत गा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना